Assalamualaikum, grade 7. How are you? Who am I? Your English teacher. And I'm from this world, not the other world. So, I've given you a hint of what we are going to do today. But before we start our lecture, I want to ask you regarding your health and happiness. Because I want to convey this message from everybody over here that we wish and pray and hope that all of you are hale and hearty and remain successful in this world and in the hereafter. So what from other worlds are we going to do today? Let's find it out. What are we going to do today? We are going to do the Other Worlds Unit 9 from your Oxford Progressive Reader, Book 7. And the pages that we shall be covering today are from 251 to 255. And the topic is Mars. Mars का पता है ना जिसको कहते हैं रेड प्लैनेट, क्योंकि उसकी मिट्टी पूरी रेड है, ठीक है? So we are actually having a factual report on Mars. But this is not a factual report, beta. It's a reflectionary factual report, which is written by Olivia Judson, who is an evolutionary biologist. और इस जो newspaper clipping है Mars, इसकी सब heading थी Some things are better left on. कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए. Evolutionary biologist का क्या मतलब है? Biologist वो शख्स होता है जो पौधों और जानवरों दोनों पे काम करता है. एवोल्यूशन का मतलब है तब्दीली, चेंजेस, ठीक है? विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल इवॉल्व. आप भी इवॉल्व हुए हो, मैं भी इवॉल्व हुई हूँ. बेबीहुड से लेके आप यहाँ तक पहुंचे हो और बेबीहुड से लेके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ. यानी चेंजेस आई हैं मेरी थॉट में, मेरी डिमांड्स में, मेरी विशेस में, मेरी बॉडी में. सो मैं इवॉल्व हुई हूँ to suit the situation. इसी तरह से organisms evolve होते हैं ताकि वो पूरे के पूरे अपने एरिया के साथ सेट हो जाएं, उनके साथ compatible हो जाएं, उनके साथ properly live कर सकें, right? सबसे पहले हम चलेंगे इस specific comprehension की vocabulary में, और vocabulary का first question था to turn the tables. ये आपको उन्होंने एक idiom introduce कराया है. इसका ये मतलब है to reverse a situation. और वहां पर एक sentence भी है. मैं आपको अपना sentence दे देती हूँ. That Ali turned the table when he stood up in the meeting and voted against the policy, right? Aqua का मतलब है water. ये Latin word है, Latin. और दो वर्ड्स जो एक्वा से आप बना सकते हैं वो एक्वेरियम है और एक्वाफायर्स है. एक्वेरियम कहते हैं वो बड़ा सा पॉट जिसके अंदर पानी होता है, पौधे होते हैं और मछलियां होती हैं. एक्वाफायर्स पानी से बनी हुई चीजें, लाइक पानी को सॉलिडिफाई करके या उसको बहुत सारा उसके साथ केमिकल रिएक्शंस करके, ठीक है. ब्राइन इज पॉन्ड्स, इट्स अ नाउन. ब्राइनी इज एडजेक्टिव. वो आपसे कहते हैं कि समटाइम्स आपको कहा जाता है ट्यूना फिश सेव्ड इन ब्राइन. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ट्यूना को कट करके उसके जो पीसेस हैं वो ब्राइन वाटर में सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स के साथ सेव किए गए हैं सो दैट इट रिमेन्स हेल्दी फॉर यू टू ईट एंड फ्रेश एज वेल. अब बैक्टीरियम का उन्होंने प्लूरल पूछा है. बैक्टीरियम इज सिंगुलर, बैक्टीरिया इज प्लूरल. उसके बाद उन्होंने कहा है कि टेरा होता है अर्थ, और लैटिन वर्ड है अर्थ के लिए टेरा. अगर अर्थली या अर्थ है तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? उसके लिए टेरेस्ट्रियल वर्ड यूज हुआ है. वहां पर उन्होंने कहा है टेरेस्ट्रियल एडवेंचर. टेरेस्ट्रियल इज एक्चुअली द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अर्थ. उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक और वर्ड आप टेरा से बना के बताएं, या आपकी नॉलेज में टेरा से रिलेटेड और क्या वर्ड है? तो टेरा से रिलेटेड वर्ड है टेरेरियम, जो है सीलिएबल ग्लास कंटेनर जिसके अंदर ग्रास और प्लांट्स रखे जाते हैं, और वो मेंटेनेंस के लिए ओपन भी की जा सकती है और बंद भी की जा सकती है. ये थी स्पेसिफिक वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन की. लेट्स गो अहेड. जी बेटा,
रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आर्ग्यूमेंट। अब क्या हुआ है बेटो, अब ये हुआ है कि ये जो आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल है ये बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट प्लेस कर रहा है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है? वो आर्ग्यूमेंट ये है कि W.H. वेल्स ने एक बुक लिखी थी, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। उस बुक में क्या हुआ था? उस बुक में ये हुआ था कि मार्शियंस जमीन पे आए थे और आते के साथ ही उन्होंने एक शदीद किस्म की डिस्ट्रक्शंस और किलिंग मैसेकर क्रिएट कर दिया था। बट हुआ यूं कि व्हेन दे वर एक्सपोज्ड टू द बैक्टीरियाज ऑफ द अर्थ दे कुड नॉट सर्वाइव एंड सो दे डिसइंटीग्रेटेड। बहुत 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 19th सेंचुरी का ये फेमस नॉवेल है, इट्स वन ऑफ द क्लासिक, और कहते हैं कि ये थी बेस साइंस फिक्शन की जो अब बनती है। इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन में आपकी जो राइटर है ओलिविया, उन्होंने ये थ्योरी पेश की है कि मार्स हमको इन्वेट नहीं कर रहा, हम मार्स को इन्वेट कर रहे हैं। हम उधर जाके रिसर्चेस कंडक्ट कर रहे, रोबोट्स भेज रहे। एक्चुअली इट्स नॉट मार्स, इट्स अस हु आर इन्वेडिंग समबडी एल्सेस पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट। उसके अलावा डिफरेंट पैराग्राफ्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में उन्होंने ये ऑप्शंस दी हैं कि अगर हम मार्स से पत्थर लेके आए तो क्या हो सकता है, आया मार्स में जिंदगी है कि नहीं है, और ये कि क्या नहीं भी हो सकता और क्या हो भी सकता है अगर मार्स से हम कोई चीज़ इधर लेके आए। और इन द एंड उन्होंने इसको कंक्लूड किया है कि जिंदगी हर तरह से बसती है, पत्थर के अंदर भी, पानी के नीचे भी, ठीक है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं अगर मार्स में ज़िंदगी मौजूद है या नहीं है उसको फाइंड आउट करने की। और ये कि अगर हम मार्स से कोई सैंपल लेके आए तो व्हाट कैन बी द साइड इफेक्ट्स, विल द साइड इफेक्ट्स बी द सेम विच वर डिस्क्राइब्ड इन W.H. वेल्स वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, और विल दे बी डिफरेंट, ठीक है, क्या साइड इफेक्ट्स उसके सेम होंगे वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स से रिलेटेड या फर्क होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था आपका कि इन व्हाट वेज डज द राइटर सी दैट द सिचुएशन व्हिच H.G. वेल्स इमेजिन्ड कुड बी रिवर्स टुडे। राइटर ये कहती है कि H.G. वेल्स ने तो ये डिस्क्राइब किया था कि स्पेसशिप पे और आपकी स्पेस शटल्स पे मार्शियंस हैव कम डाउन टू द अर्थ, लेकिन एक्चुअली ये हो रहा है कि हम लोग मार्स में जाके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं। स्पेशली हमने रोबोट्स उधर भेजे हुए हैं जो जाएं, पता करें और एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करें। We are invading Mars and we have sent robots for search. आंसर अब यू फ्रेज आउट करेंगे, the writers saw that the situation which H.G. Wells imagined is reversed because it's not Martians who are invading us, it's we are invading them. We have sent our robots on Mars and a search is being conducted regarding the climatic situation of Mars and the possibility of life. Second question, what aspect of Mars suggests that life could not have existed there? Well, according to the writer, according to the author, he says that deadened briny ponds and salty marshes suggest that life could not have been existed over there. Along with that, radiation has caused the atmosphere to be ferociously dry and cold, and thus no life form can survive those extreme weather. ठीक है? Explain how the writer supports her point that life on Mars could persist to this day. Well, the writer supports her point that life on Mars could persist today as she explains the presence of surface water, the presence of ice puddles on Mars, and that there can be underground lakes, there can be aquifers, there can be places which are lukewarm and which can help the bacterias or viruses to survive, right? Explain the writer's strongest reason for believing that Mars could be home to something. How does the writer illustrate this notion of hers? ठीक है, इसका आंसर आप यूँ लिखेंगे, the writer's strongest reason for believing that Mars could be home to something is by giving the fact that lives have been found at peculiar environments,
lives have been found inside the stones. In the coldest of all situations, there have been lives who had been frosted in the rocks, and when the rocks melted, they became alive again. So lives have been formed on earth in multiple of different diverse situations, diverse environments, right? This is question number 4. Let's move on to question number 5. The writer believes that we should be cautious about bringing the Martian rocks back to earth. Why? The writer is very cautious regarding the Martian rocks being brought back to earth because the history has pronounced very sobering reactions to the things introduced in the world. Like when Spanish invaded the world, they brought smallpox and measles. Those smallpox and measles killed hundreds and hundreds of people over a passage of a decade. Along with that, HIV or AIDS, it prevailed with the chimpanzees, and now it has become a slow poison, killing hundreds of people every day. So there could be devastating effects of bringing Martian rocks to Earth. Summarize the paragraph for bringing Martian rocks sample to Earth. This is the same paragraph that I have described. That's why I have put an arrow that the writer thinks that the rock bringing could have a devastating effect. The Martians could definitely bring those microbes, bacteria or viruses that can become lethal for the Earth's environment and inhabitants. Okay? Arguments to support organisms from Mars cannot be harmful. You are asked to give 2 arguments that has been given by the writer that organisms from Mars cannot be harmful, and the 2 arguments are that maybe nothing exists there. Maybe it's just a hypothetical statement. Maybe it's just a theory that there are things living over there. And maybe if the bacterium or viruses have actually reached Earth, they can harmlessly settle or die. This have been observed in the past as well. So these are the 2 options that can happen. Explain the role of NASA's planetary officer. The role of NASA's planetary officer is to protect universe from the scum of Earth and protect Earth from the scum of universe. Which doubts about the safety of receiving organisms from the Mars does the writer raises in this specific comprehension? The writer says that these organisms can be brought down with safety, but what if an accident happens? What if someone other than NASA, some other country bring those organisms and they are not fully prepared to handle them? See the destruction that can be caused. The earthly ecosystem can be completely disturbed, and when the ecosystem will be disturbed, bache, we won't be able to live. So this is what the writer says in her paragraph. The Earth's ecosystem can be completely wiped off, can be scattered, can be ruptured. And when the ecosystem is disturbed, then the entire world dies. This is the thought, the problems, the fear that the writer has described in her article. Let's move on to the last question. The writer's concluding point is to be explained. What does she refer to the February issue of the Journal of Nature? Well, she refers regarding a bacteria or regarding a bacterium who was living off in the electrons of the metallic iron. एक बैक्टीरिया था इतना स्मॉल जो आयरन के आयंस में से आयरन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में रह रहा था. तो उसने ये कहा है राइटर ने फाइनली that it is scary if we decide to bring something back from Mars.
So we should not do so. We should do our experiments over there in Mars as long as we want to. And in the end, she says that rather than observing and searching Mars, we should search the Earth in which we live in. There are so many places which remain undiscovered, which nobody has heard of, which has been not discovered yet. So rather than moving out of the world and going high in the sky and discovering some planet which may or may not have life, move on to Earth and discover all the life forms that are present in this Earth. क्विक रिकैपिचुलेशन कर लें आज के लेसन की। क्या किया हमने किया यूनिट 9 अदर वर्ल्ड्स, और उसमें हमने एक कॉम्प्रिहेंशन किया जिसका नाम था मार्स। वो एक फैक्चुअल और रिफ्लेक्शनरी रिपोर्ट थी जो राइटर के ऑथर के आइडियाज पर बेस्ड थी, ठीक है। वहाँ उसने कंपेयर किया वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स को रिगार्डिंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग टुडे एंड रिगार्डिंग हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। जरूर पढ़ना, एंजॉय करोगे, स्पेशली दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, या जो बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं वो भी। हंसते खेलते रहो, मुझे दुआओं में याद रखो, पूरी दुनिया के लिए दुआ करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।